सो इंटायर मैं इंग्लिश में बोलूंगा ताकि हमारे बच्चों को भी समझ में आ जाए, ठीक है? सो किड्स कैन अंडरस्टैंड दिस वेल. सो इंटायर हिंदुइज्म, राइट? इंटायर हिंदुइज्म, तो आप लोगों को ये जान के अच्छा लगेगा कि आई हैव रिटन मल्टीपल बुक्स ऑन हिंदुइज्म. तो मेरी कई सारी अमेजोन में बुक पब्लिश्ड है ऑलरेडी. हम लोग यहाँ पे एक ईयोगी गुरुकुल करके एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी रजिस्टर्ड है, तो उसमें कोर्स बुक चलती है. So, जो entire Hinduism, right? If you call yourself Hindus, right? Where exactly it comes from? So the entire Hinduism comes from this book called Rig Veda, right? Rig Veda is the first book of humanity. ये पहली book है. If you think कि what is written before this, there is no other book on this planet, on this face of earth before this. Nobody can date this because it is very hard to date this, because we had a what we call Shruti tradition. Shruti means recitation, means the rishis of ancient India. In this particular case, 400 rishis, 10,552 mantras are written in this. 10,552. They used to recite from 4 o'clock until 8 o'clock in the morning every day, and this was passed down from one generation to next generation. So this is the book, root book of Hinduism. So majority of you will say, you know what, we haven't read this book, so how come we are Hindus, right? So our rishis were very intelligent. This was the not only book. So Rig Veda, from Rig Veda, three more books came in existence, and the three more books are called Yajurveda, the next book, and Yajurveda followed by Samaveda, followed by Atharveda. Yajurveda has 1975 mantras, and followed by Samveda has 1875 mantras, and then Atharveda, which is the last Veda, it has 5,977 mantras. Overall total 20,379 mantras written by 861 rishis. So a majority of Hindu, like if you talk about marriage ceremony, it comes from Yajurveda. If you talk about death ceremony, it comes from Atharveda, Rig and Yajurveda. So all the rites and ritual come from. But majority of people have not read this. So I'm going to link this all this story back to Ram, right? So if you have not read this, so our rishis, what happened there when this book came in existence? People said, you know, it's too difficult to read. How do you convert the message of this into normal human form so that everybody can understand? So हमारे ऋषिज ने क्या करा? They were very intelligent. They looked at in the entire planet. They said, who is following the life of Veda? So a man walks on the form of man, and his name was Lord Rama. He was the avatar of Vishnu. His life story, a history, was followed by Rishi, and they wrote that book about his life. So basically, in essence, he is following the life of Veda, message of Vedas, but in a historical context. So a history book came in existence called Ramayana. 24,000 verses, 7 chapters in the Ramayana, and the life story of Ram. This is roughly, we are calling almost 12,209 BCE. Now the Indologists have dated it very clearly. Nilesh Oak Bhai from America, he is like NRI like us. He has written this book 12209 BC when the Ram Ravan Yuddha has taken place. The more research is going on, as you see in next 10 to 20 years, there will be like hundreds of books like this coming in existence. So Rama was a real person who walked on this path, followed the message of Veda, right? So now time passed again, and time is very bad. People are fighting, families are fighting. So the same message now wanted to be given in a different format. That was basically Treta Yuga. Now it's coming to Dwapar Yuga. So Mahabharata, another two families they took example, which is basically Pandavas and Kauravas. So 100,000 verses of that are written called Mahabharata, the another historical text. And out of that Mahabharata, there is a chapter comes out from Santipur. That book called Bhagavad Gita has 700 slokas. So basically, the message of Vedas is being told in historical context, followed by first by Ramayana, then by Mahabharata, and then Gita. The best way you understand this is like, say for example, you have a bucket of orange, right? Orange, real orange. That's like Veda. You take out the juice out of that.
So another text came after that. So which I can explain you how. Say for example, this is the book, right? And it has 10 chapters. So if I pick 10 chapters like this is one chapter, and this name is called Veda, right? And if you summarize it and put the last page like at the end, what we call end, who can say in Hindi, what we call end? Ant, right? Ved plus Ant, what becomes? Vedant. So another textbook came in existence. People don't wanted to read Veda. They summarize the Veda in summary text called Vedant. वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम. वेद का ही दूसरा नाम जो उपनिषद है. वेदांत means Vedant is the Upanishad. So how many book came in existence? 108 of these. So basically, again, Vedas, four books, followed by Upanishad, followed by, while these were written in here and there, two historical books came, Ramayana, Mahabharata. Now time has passed more. This is like you're coming out very closer to already in the Kali Yuga. People don't want to read Vedas, people don't want to read Ramayana, Mahabharata, too long stories. So they said, what do we do? People want very compact, small story. So a story format of tradition started called in story what we call Sanskrit Puran. So Puran became another storytelling tradition. How many of these? So you may have heard already. So there are 220 plus Puran. So out of that 220 Puran, there are 18 Mahapurans. And out of that 18 Mahapuran is called largest Puran called Skanda Puran. Out of that, in the Skanda Puran, there is something called Reva Khand, one chapter. Out of that comes out the Satyanarayan Bhagwan story, which you do Satyanarayan. So if you are reading Satyanarayan Bhagwan story, you are essentially reciting a Puran all the way going the message of Veda into story format. So 80% of Hinduism, what we know today, it is in the form of Puran. And after the Puran, lots of texts have been written, yoga, scientific texts, many discoveries, Surya Siddhant, Hatha Yoga, Pradipika, thousands of texts on astronomy, astrology, like that it started. Then we explored the human mind. So how many books we have written? 10 million. 10 million scriptures our forefathers have written by hand. Can you imagine? Forefathers just wrote by hand. And how many of that we have read? What I can conclude with one thing that I have read over 150 top motivational speakers of the world, their summary book or entire book in some form. It is not my words. You can check it yourself. If you take top 150 motivational speaker of this planet, summarize their books, 80% of what they say is in Bhagavad Gita. So the choice is yours. अगर आपको गंगा का पानी पीना है, वेस्ट बंगाल में गिरती है वहां पर पीना है, कानपुर में पीना है, हरिद्वार में पीना है या गंगोत्री में पीना है. Where do you want to hear this? So when you have Gangotri, you have full access. Helicopter है आपके पास, सीधे वहां ड्रॉप करो ना. Our helicopter is Bhagavad Gita. Why do we need to go and ask a Patrick or some कोई Robert जो बंदा है उससे सीखना है हमें? सेकेंड हैंड नॉलेज का क्या मतलब है? फर्स्ट हैंड नॉलेज लो ना हमारे से. एंड इंटरेस्टिंगली दे आर ऑल टर्निंग टुवर्ड्स हिंदुइज्म. सो नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम. लॉर्ड राम की स्टोरी इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि you just look at the scales, right? Just think about Rama Leela, just story of Ram. People are not getting bored with Ram. Why they are not getting bored with Ram? You can imagine. India में 565,000 villages थे 18th century में when Britishers left. Every village में एक बार रामलीला होती थी. One time in a year, right? If you take that number and multiply for last 3,000, I'm just taking 3,000 year example. 1 billion times we have recited Ram Leela like that. Forget about how many times we are reciting. When Ramayana is recited, Ramcharitmanas, 24-hour recitation, no other book on this planet. Holy Quran takes only 6 to 8 hours. Ramayana takes 24 hours. That is the scale of Ramayana. Over 30 different languages Ramayana has been written. 300 versions of Ramayana is there. There is no language in India where a poet has not come and wrote the Ramayana book in their own format. Why we are fascinated with Lord Rama? Now I will ask this question to all of you, one at a time. So I'm going to ask you one at a time. So he is ideal. We call Maryada Purushottam, right? So he is the ideal man who walked
on this planet. So if we call him the ideal son, now who can tell me, was he an ideal son or not? He was, right? एक शब्द पे दशरथ ने बोला जाओ वनवास, उसने ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट कर लिया, आइडियल सन हो गया. Was he an ideal husband or not? How he was ideal husband to all the girls, right? उनके लिए मैं बोलता हूँ, सोचो आप जो है जहां पर कि no modern technology is there, you're with your wife in the jungle, all of a sudden somebody comes and kidnaps your wife, right? You're gone. Rama could have found a local solution very easily, right? He walked 2000 kilometers down south, built an army to bring his wife back with dignity, and killed the person who basically even touched Sita. So is he not an ideal husband? A lot of people say, कि उनकी अग्नि परीक्षा ली थी ये थी. They don't understand the character of Rama well. He walked 2000 kilometers down south and brought his wife back. So ideal husband था. Was he an ideal brother? He was, right? How? Take the example, ideal brother, even within the Ramayana, right? In the history of humanity, two brothers are fighting. दो ब्रदर फाइट कर रहे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉट टू टेक किंगडम फ्रॉम ईच अदर, बट तू ले ले किंगडम, नहीं तू ले ले किंगडम. लास्ट में भरत बोलते हैं मुझे किंगडम क्या लूंगा, तुम अपनी चरण पादुका दे दो. मैं अपने सिर पे रख के लेके गए और सिंहासन पे चरण पादुका रखी थी, पूरे टाइम वो नीचे बैठते थे, ऐसे शासन किया. सो आइडियल ब्रदर. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं. आइडियल फ्रेंड थे कि नहीं थे? कौन बता सकता है, कोई स्टोरी बता सकता है? बताइए आप. सुग्रीव. सुग्रीव की स्टोरी से एग्जांपल हो, आइडियल फ्रेंड थे. कितनी फ्रेंडशिप के लिए उन्होंने खड़े रहे. ऐसे ही उन्होंने विभीषण के साथ जब मित्रता करी तो लास्ट में नॉर्मली क्या होता है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिस किंगडम को आप जीतते हैं, यू आर बेसिकली आइदर यू आर रूलिंग और यू पुट योर सन और समबडी देयर एज ए. उन्होंने उसको पूरा वापस कर दिया, बोला मुझे, मैं यहाँ राज्य के लिए थोड़ी आया था, है ना. तो ये आइडियल जो है, एक आइडियल हो गया. उसके बाद अब ये बताओ, वॉज ये आइडियल पॉलिटिकल लीडर? पॉलिटिक्स आती थी कि नहीं राम जी को? पूरी आती थी, आती थी ना. सो आइडियल पॉलिटिकल लीडर एंड आइडियल स्ट्रैटेजिस्ट एज वेल. इमेजिन करो जंगल में यू हैव लेफ्ट योर मिलियंस ऑफ आर्मी इन अयोध्या, नाउ यू आर रोमिंग अराउंड, यू डोंट इवन नो हु हैज किडनैप्ड योर वाइफ. वो कितने लोगों के आर्मी डाउन साउथ जाके ही इज बिल्डिंग आर्मी विद मंकीज, विद ऑल द बनवासी पीपल, एंड स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, कैसे लंका से ही कोई बंदा लेके ऐसे उसको करना है, वो ऐसे करके उन्होंने बनाया. ये तो आइडियल पॉलिटिकल लीडर, आइडियल स्ट्रेटेजिस्ट. अब उसके बाद वाज ही आइडियल आर्किटेक्ट? सोचो आप, जिस बंदे ने सेतु बनाया, कई लोग बोलते हैं सेतु इसने उसने बनाया, आइडिया तो भगवान राम का ही था ना कि हमको बनाना है. लीडर ने विल दी कि मुझे चाहिए सेतु, मुझे क्रॉस करना है अपनी सेना को, तो इतना बड़ा इम्पॉसिबल सेतु उन दिनों में सेतु बना दिया जिन दिनों में मतलब पॉसिबल ही नहीं था. इट इज द लार्जेस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर टिल दिस डेट. लाइक इफ यू गो बैक इन 10,000 ईयर्स की हिस्ट्री में, इससे बड़ा कोई नहीं. पिरामिड भी जो बना रखे ना इजिप्ट के, वो भी बहुत छोटे हैं. सी के ऊपर बनाना कितना डिफिकल्ट है. तो आइडियल आर्किटेक्ट थे. और उसके बाद आइडियल किंग तो थे ही वो. आइडियल किंग तो एवरीबडी नोज राम राज्य. बट अनदर कैरेक्टर राम जी का, ही वॉज ए आइडियल एनिमी. वॉज ही आइडियल एनिमी और नॉट? टेल मी. है कौन बोलेगा? आप बताइए सर, क्यों थे वो? सीखो मतलब डिग्निटी दी अपने एनिमी को, लास्ट में डेथ में भी डिग्निटी दी. तो रावण ने जाते जाते बोला भगवान राम अगर किसी को कोई एनिमी मिले तो आपके जैसा मिले. मतलब मरने पर भी जो है उनके ऊपर डिग्निटी के साथ उनको अपने एनिमी के लिए है. इतने सारे कैरेक्टर हैं राम की लाइफ के. सो दैट इज व्हाट टुडे व्हेन वी आर लुकिंग एट इट, राइट. ये अब हमारा टाइम आ गया है. द डेज आर गॉन. Today's Hindus are unapologetic Hindu. Unapologetic है हम. जैसे कई लोगों को हमारे ब्लड में ना वो होता है, we are the oldest living civilization on this face of earth. Oldest कैसे है? आप भारत को पकड़ो, start walking towards east. आप वहां से जाओगे बांग्लादेश जाओ, म्यांमार जाओ, लाओस, फिलीपींस, होते होते जापान, जापान से घूमते हुए आओ आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीस, आइसलैंड, यूरोप. Now you just tell me कि 2000 years back, 3000 years back, 5000, 10,000 years back,
जो लोग वहां पर थे, व्हाट वर दे? ठीक है ना? अब जो बाकी के जितनी भी सिविलाइजेशन है, जितने भी कंट्रीज हैं, दे आर जस्ट इन सम फॉर्म कन्वर्टेड टू द मॉडर्न रिलीजन क्रिएटेड बाय ह्यूमन। हमारा जो है नेचुरल रिलीजन है, मतलब वी आर द ओनली पीपल। उसका सीधा मतलब ये कि अगर आज मैं तिलक लगा रहा हूं, आज मैं ये दिया जला रहा हूं, आज से 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले मेरे पूर्वज इसी तरीके से पूजा करते थे। Except you, nobody can say this on this face of earth. हिंदुओं के अलावा कोई कह ही नहीं सकता है। वी आर द ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजन, और उसके बाद भी आप अपोलोजेटिक होने का क्या मतलब है? प्राउड के साथ सोशल मीडिया में जाइए, फोटोज पोस्ट कीजिए, प्राउड के साथ बोलिए। और उसकी सबसे बड़ी पावर मैं आज लाइव एग्जांपल के साथ दे रहा हूं। हमारे वहां राम मंदिर बना, आरटी न्यूज ने हमारे खिलाफ इतना गंदा आर्टिकल पब्लिश करा, देखा था आपने? कितना बेकार है, कई लोगों ने पढ़ा। तुरंत कैंपेन शुरू हुई, लोगों ने पिटिशन की बात चालू होने लग गई, और उसके बाद इतना ज्यादा एंटी रिएक्शन हुआ हिंदुओं का, अभी न्यूज आ रही कि वापस पुल बैक कर दिया, डिलीट कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ हिंदू, दिस इज द पावर ऑफ सनातन धर्म। वो दिन गए। कास्ट, क्रीड, कल्चर, रीजन, लैंग्वेज, इनसे ऊपर उठना है और हमको एक बनना है। और जो कास्टिज्म हमारा, जिसने सबसे ज्यादा डैमेज करा है हमारे सनातन धर्म को, इट इज टाइम टू वाइप दैट आउट कंप्लीटली। हम सब एक हैं, हिंदू हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस, रियली अप्रिशिएट आप लोगों ने आया। अब यहाँ से हम अपने भजन वगैरह चालू करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा वगैरह करते हैं। थैंक यू। अगर किसी को कुछ भी बोलना है, ऐसा नहीं कि मैं ही बोलूंगा, आप लोग भी आगे आके बोल सकते हैं।